Hello students, this is me Sadaf Sayyad here. As promised, I am back with the first part of Plant Kingdom, that is where we will be discussing about the important tricks and MCQs, neat MCQs on algae. So without wasting time, हम लोग आगे बढ़ते हैं. To all those who are new here, do not forget to like, share and subscribe. But उससे पहले be ready with your notebooks and जिन्होंने मेरा एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टॉपिक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, प्लीज जाकर algae पर एक बार मेरा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. उसमें जो नोट्स दी गई है वो नोट्स नोट डाउन करिए एंड देन यू कैन बी बैक हियर. यू कैन सी द इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, mnemonics, पोएम एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज द एंटायर algae का कॉन्सेप्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी हम लोग डिस्कस करेंगे विद द वेरी फेमस टिक टिक टाइमर, और उसके हिसाब से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को जज कर सकते हो कि आपको कितना ग्रास्प हुआ, कितना समझा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ेंगे. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, सो ऑल दोज हु मिस्ड माय एक्सप्लेनेशन दे कैन हरी अप, गो बैक, see the video on the entire explanation of the topic and be back here. So let's proceed. The bio bear presents to you part 1, that is algae. हम लोग एक छोटा सा एक पोएम देखेंगे जिससे तीनों टाइप के algae और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अच्छे से याद हो जाए. Proceeding first is chlorophyll. The green algae with chlorophyll. A and B, what's the fill? And the starch, the stored food they call. Don't forget cellulose and pectose in the wall. 2 to 8 equal in a apical thread. Flagella is what they are said. Breaks into fragment or moved by zoospore, or they do it by AIO for some more. Come on, let's see who they are. Chlamydium, Monas and Spirogyra the star. Eulothrix and Cara are next to B. They all belong to chlorophyll C. To all those students जिन्हें अभी भी सोच रहा है कि ये AIO क्या है, अगर जिन्होंने मेरा पहला वाला previous explanation सुना है, so they will know. But to all those who are new here, AIO is anisogamous, isogamous and ogamous. Next, trick to remember Phaeophyceae. The brownies with A and C in. Don't forget the fucoxanthin, stuffed with tasty mannitol and cellulose and algin in the wall, stored with laminarin to unequal flagella that helps them spin. Spore having pear-shaped figure, breaks into fragment with great vigor. AIO is what they do. Laminaria and sargassum to name a few. The member that makes all the fuss. Call them out, ectocarpus and fucus. And who is the one with the charismata? Whoa, it's the dictyota. Tell me, who could they all be? Yes, they are the Phaeophyceae. Next, we have a small poem to remember the Rhodophyceae. Red rhodi is added with phycoerythrin, having the floridin starch filled in. Cellulose is in the wall, but have no flagella, big or small. Lazy oogamous and non-motile spore. They are Polysiphonia, Porphyra and more. Gracilaria is a member full of grace. Gelidium is next in the race. Name the red rhodies to me. Yes, none other than Rhodophyceae. So next we have is a small mnemonic to remember all the important examples of the each individual classes. And before we proceed further, if you haven't subscribed to the channel, please do so. And please share with all the NEET aspirants and all the 12th graders. Chlorophyceae. Children sprayed on Ultratech car. Children sprayed on Ultratech car. Chlamydomonas is children. Sprayed के लिए है Spirogyra. Ultratech is Eulothrix. And car is Cara. So shortcut, children sprayed on Ultratech cars. Next, Phaeophyceae. Fat sir give lame diet excuses. Fat
fucus, sargassum का sir, lame is laminaria, diet is dictyota, and excuses is from ectocarpus. Gracie and Polly ate popcorn and jelly. So here you have to remember jelly is not from J but rather than use it as G. So you will remember it better. Gracie is gracilaria, Polly is policifonia, Porphyra is popcorn, and jelly for gelidium. So these were the small tricks in mnemonics. I hope you all have liked it and you all have written this down, students. If not the poem and you do not know how to mug up the poem and you're comfortable with remembering the concept, it is fine. Lekin yes, shortcuts. Children played on Ultratech cars. Fat Sir gave lame diet excuses, and Gracie and Polly ate popcorn and jelly. These are going to help you a lot, whereas MCQs are concerned. So before wasting time, this reminds me of the MCQs. So first of all, let's jump fast onto the most important expected MCQs on algae. So let's proceed. This is the first question. आप लोग सबको आपके आंसर्स एक नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं 1 to 25 क्वेश्चंस के. टिक टिक टाइमर आपको दिया जाएगा and in the end you can check your answers using the answer key. So let's proceed. First, an example of colonial algae is Chlorella, Volvox, Eleutheryx, or Spirogyra. And here is the tick tick timer. Time's up, and it's time to move on to the next question. As I told you, keep on writing down all your answers. या आप सीधा नंबर भी डाल के लिख सकते हो. And in the end, you will get the answer key to check all the answers. So to all my students, जिन्होंने ये अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, अगर आप लोग ने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, टिप्स अच्छे से देखा है, रिवाइज करके आए हो, तो दिस question should be very easy for you. Life cycle of ectocarpus and fucus respectively are haplontic, diplontic, diplontic, haplodiplontic, haplodiplontic, diplontic, haplodiplontic, haplontic. And here is the timer. Yep, time's up. Next, which one of the following statement is wrong? ध्यान से ये देखना है, आपको वो बताना है जो गलत है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, रॉन्ग को 3 बार अंडरलाइन कर लो. First, algae increases the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Algin is obtained from red algae and carrageen from brown algae. Agar-agar is obtained from gelidium and gracilaria. Laminaria and sargassum are used as food. And your 10 seconds on the screen. If you have read the NCERT nice notes लिखा है अगर पहले वाले वीडियो से, तो ये बहुत easy question था. Scoring. Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? Examples पता होना चाहिए. Classes दिए नहीं है. Chlorophyce, rhodophyce, phaeophyce आपको दिया नहीं जाएगा, आपको examples दिया जाएगा. So you have to very well remember कि कौन से example कौन से class को belong करता है. Select the wrong statement again. Isogametes are similar in structure, function, and behavior. Anisogametes differ either in structure, function, and behavior. In Oomycetes, female gamete is smaller and motile, while male gamete is larger and non-motile. Chlamydomonas exhibits both isogamy and anisogamy, and Fucus shows oogamy. Here you go. Isogamous condition with non-flagellated gametes is found in Chlamydomonas, Spirogyra, Volvox, Fucus. Algae have cell wall made up of cellulose, galactins, and mannins, hemicellulose, pectins, and proteins, pectins, cellulose, and proteins, cellulose,
hemicellulose and pectins. डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, फट सॉल्व करना है। कितना इजी क्वेश्चन है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, कम ऑन स्टूडेंट्स, इसके लिए मुझे रीड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, इट इज दैट सिंपल। इंट्रोडक्शन के अंदर ही मैंने दिया है, नोट्स में भी दिया है, इसलिए प्रीवियस वीडियो अभी भी अगर जिसने नहीं देखा है देख के आइए और नोट्स बराबर लिखिए, मेंटेन अ नाइस नोटबुक। If you are asked to classify various algae into distinct groups, which of the following characters you should choose? ऐसा कैरेक्टर आपको लेना है जो तीनों के लिए अलग हो। यानी जब आपने वो टेबल पढ़ा होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया है, उसके अंदर से आपको एक ऐसा कैरेक्टर चूज करना है जिसमें ये तीनों चीजें अलग थी। टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। Which one of the following statements is wrong? Algin and carragin are products of algae. Agar-agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Chlorella and Spirulina are used as space food. या फिर mannitol is stored food in rhodophyceae. Come on, येलो से रेड होने से पहले ये वाला स्टेटमेंट सॉल्व हो जाना चाहिए। बहुत इजी है ये, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस जैसा मैंने आप लोग को बोला आता है, नोट्स भी दिया है। Male gametes are flagellated in Polysiphonia, Anabena, Ectocarpus या Spirogyra। सी क्लासेस का नाम ही नहीं दिया, आप लोगों को क्लासेस पता होना चाहिए कि किसके अंदर ये मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, और अगर क्लासेस पता है तो फिर आपको उनके एग्जांपल्स पता होना चाहिए। दोनों के लिए ट्रिक दी है आपको। Identify the incorrect statement. The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters. Linnaeus classification of plants was a natural classification as it was based on androgen structure. Artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. Natural classification systems are based on natural affinities among the organisms. Identify the incorrect statement. Numerical taxonomy is based on all observable characteristics. More weightage is given to the reproductive characters, and all other characters are given equal importance in numerical taxonomy. Cytotaxonomy is based on cytological information. Chemotaxonomy uses chemical constituents of plants. जिन्होंने भी नोट्स लिखा है उनके लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन। So NCERT, keep reading the NCERT, keep writing notes, important points, और MCQs भी देखो। Solve the MCQs again that you have got wrong. आपको incorrect match, identify the incorrect matched pair, यानी वो पेयर जो करेक्टली मैच नहीं हो उसको आइडेंटिफाई करना है। अगेन इसके लिए आप लोगों को एग्जाम्पल्स, क्लासेस का कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पता होना चाहिए। तो यही वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले दोनों की शॉर्टकट दे दिया है। Identify incorrect statement regarding algae. पाँच 10 सेकेंड थोड़ा और एक्स्ट्रा दे देती हूँ टू ऑल दोस्त जो लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। What is not true for red algae? Lack central and flagella. Accessory pigments like phycocyanin, phycoerythrin, and allophycocyanin. They produce using alteration of generation. The stored food is Floridian starch, very similar to cellulose. भले दूसरे ऑप्शंस के साथ आप लोग वाकिफ नहीं होंगे, बट ऐसे क्वेश्चन में इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज नॉट ट्रू,
You should be knowing what is true. So you can go with the elimination technique. Which of the following groups of algae produces algae? Options are directly on your screen. Phycophyceae, Chlorophyceae, Rhodophyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae, Rhodophyceae और Phaeophyceae only. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, एल्गिन इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन कर लो. एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गे इज नॉट, कौन सा नहीं है वो बताना है. एक्साइटमेंट में ग्रीन एल्गे ही नहीं मार्क कर देना, कौन सा नहीं है वो बताना है. एग्जाम्पल्स के लिए शॉर्टकट दिया है, अगर ये एग्जाम में आ गया शॉर्टकट याद है, वो 3 लाइंस याद है, तो दिस इज अ वेरी इजी पीजी क्वेश्चन. हियर इज योर टाइमर. वो चिल्ड्रंस परेड वाला, फैट सोर वाला, you might be remembering all these. Vegetative reproduction in chlorophyceae takes place by fragmentation, spore formation, only spore formation, only fragmentation या फिर isogamous. Asexual reproduction in chlorophyceae is by zoospore formation in antheridiospore, fragmentation, zoospore formation in zoosporangia, both 1 and 2. अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि यार 3 ऑप्शन एकदम एक जैसे लग रहे हैं, 1 and 2 वाला भी 1 और 2 अलग से भी दिया है, तो शायद 4th ऑप्शन होगा. या वो जो ऑल ऑफ दीज वाले एग्जाम्पल्स होते हैं वो बच्चे ऑल ऑफ दीज ही कर लेते. तो ये उन बच्चों लोग के लिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. एक छोटा हिंट भी दे दिया है मैंने साथ में. सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस. इफ यू हैव रेड द एनसीईआरटी, एंथेरिडियोस्पोर, फ्रैगमेंटेशन, ज़ूस्पोर से आपको कंफ्यूज होगी ही नहीं. Zoospore formed during asexual reproduction in chlorophyceae are sexual reproduction in chlorophyceae is off. इसके अंदर आप लोग को पोयम याद होनी चाहिए है, कॉन्सेप्ट AIO वाला, वोवेल्स वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. क्लोरोफाइसी बहुत ही सिंपल है, याद रखने को भी. यस, ये है पिक्चर बेस्ड डायग्राम, मेरा फेवरेट क्वेश्चन. सबसे पहले तो आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो उसके अंदर आपको ये डायग्राम दिख जाएगा. अब आपको बताना है कि किसका है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उसके लिए बता दो ये है वॉलवॉक्स. अब इसके आगे आप लोग को खुद देखना पड़ेगा which of the following features is not correct about that class. उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये डायग्राम किसका है और वो ऑर्गेनिज्म कौन से क्लास को बिलोंग करता है, और फिर only you can tell about the answer. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of dash and outer layer of dash. पढ़ाते टाइम भी मैंने बोला था आपको कि you'll have to remember inner layer of dash and outer layer of dash. आता है इस पे MCQ. अब बच्चे कंफ्यूज हो गए फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन के बीच में या थर्ड या फोर्थ ऑप्शन के बीच में. लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स. व्हिच ऑफ दीज आर सीन इन Phaeophyceae. तो एज आई टोल्ड यू, इसके लिए अगर आप लोग ने ऊपर पहले पोयम जो याद रखी होगी तो ये तो आप लोग बहुत इजी है. ABC वाला मैंने ट्रिक भी बताया था मेरे लास्ट वीडियो में. क्लोरोफिल का, फ्लोरिडियन स्टार्च का भी बताया था मैंने कि स्टार्च से अलग है थोड़ा. फ्लैजेला किसके अंदर नहीं प्रेजेंट है वो भी बताया था. तो ऐसे के अंदर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट्स. इससे हमें 2-3 चीजें पता चलती है. पहली तो ये कि आपको कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, कि क्या इंपॉर्टेंट है, उससे क्या पढ़ना है. दूसरा ये कि कैसी चीजों पे MCQs आते हैं. तीसरी ये कि अगर इनमें से 25 MCQs जो हमने सॉल्व किया, चांसेस है कि इन्हीं में से 1-2 MCQs रिपीट हो जाए, तो आप लोगों का बहुत फायदा हो जाएगा क्योंकि 4 मार्क्स आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे. सो दैट इज द रीजन, कीप प्रैक्टिसिंग द MCQs. पैनिक नहीं होना है. NCERT अगर अच्छे से भी पढ़ोगे तो अगर कोई न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं, so there is no difference going to be.
These are the following answer key for the MCQs. Have a quick look at them. ये हो गया फर्स्ट 10 MCQs. आगे बढ़ते हैं. And this is where we finish up with today's video. I hope you have learned a lot many things. अलग अलग टाइप के नीट के important MCQs, कैसी चीज़ों को concept को कैसे याद रखना है, shortcut tricks, and this have been a helpful video for many students. So in case if it is so, please do not forget to like, share and subscribe, and keep writing notes, keep maintaining your neat key notebooks. Thanks a lot for being such a patient audience. Stay tuned for more such coming videos on plant kingdom, bryophytes, pteridophytes, angiosperms, gymnosperm, and more latest chapters from the NCRT. Always stay curious. It is so said, millions saw the apple fall. Only Newton asked why. So that's the reason. Always keep wondering, always learn to ask the question why. Stay curious. Thanks a lot for subscribing to my channel, The Bio Bears. If not, you have not subscribed yet, please do so. Thank you so much. See you again in the next session. Bye bye.